बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। टोरंटो 360 टेलीविज़न की इलेक्शन ट्रांसमिशन स्पेशल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखें, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। 20 सितंबर इलेक्शन डे है, डी डे है, बहुत तैयारियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जल्दी इलेक्शन अनाउंस कर दिए, कुछ लोग कहते हैं कि देर से अनाउंस किए हैं। किसी ने कहा कि बैकफायर हो गया, किसी ने कहा ऐसा नहीं है, फर्स्ट डिबेट होने दें फिर देखें। सर्वेज पोल्स डिफरेंट हैं, नंबर रोज़ चेंज होते हैं, रोज़ बदलते हैं। पॉपुलैरिटी प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की जो अभी भी वो उनके जो कंजर्वेटिव लीडर हैं उनसे ज़्यादा है और अभी नंबर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। हम रोज़ाना कोशिश कर रहे हैं कि अपने मेंबरान पार्लियामेंट से आपके मुलाकात कराएं। नो योर कैंडिडेट, हमने इससे पहले एक उम्मीदवार से आपकी मुलाकात करवाई थी। आज हमारे साथ हमारी अपनी मेंबर पार्लियामेंट इकरा खालिद साहबा मौजूद हैं मिसिसागा एरन से, और सेकंड टर्म है उनकी और इंशाल्लाह उम्मीद बहुत है थर्ड टर्म भी होगी। उनके बारे में बात करेंगे, कुछ उनके बारे में जानेंगे और फिर इलेक्शन के बारे से उनसे बात करेंगे। खुश आमदीद कहेंगे। इकरा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अर्शद भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। खैरियत से? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये सवाल मैं अक्सर करता हूँ, वह नॉर्मली जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनसे क्वेश्चन किया था कि आपको शुरू से अदाकार बनने का शौक़ था, अदाकारा बनने का शौक़ था, तो आपको भी शुरू से सियासत में आने का शौक़ था? मेरी वालिदा मुझे एक कहानी सुनाती होती हैं। मेरे 3 भाई हैं, तो मैं कुछ 5-6 साल की थी, तो एक दिन ना वो अपनी बैकयार्ड में, उस वक्त भावलपुर में रहते थे पाकिस्तान में, तो मैं खड़ी अपने भाइयों को तीनों को बिठा के उनके सामने तकरीर कर रही थी। अच्छा। तो तब से वोटर्स को जो है खिताब कर रहे थे। तब से मॉम शी स्टार्टेड कॉलिंग मी बेनजीर भुट्टो, you know, and I don't know, I think naturally my dad always says that I have these qualities that are best used here. So अच्छा, अभी आपने वालदा की बात भी की और फिर वालिद साहब की, खालिद साहब की बात भी की। कितना इम्पैक्ट करता है, कितना इम्पोर्टेंट ये है कि पेरेंट्स का आपकी मोटिवेशन के लिए सियासत में आने के हवाले से है इसमें कोई बहुत बहुत ज़्यादा है। स्पेशली मेरे वालिद साहब, मेरे बाबा का बहुत ज़्यादा। आई रिमेंबर जब मैंने ग्रेजुएट किया यूनिवर्सिटी से, फ्रॉम यॉर्क यूनिवर्सिटी, तब माई डैड सेड कि इकरा, आई थिंक यू शुड कम इनटू पॉलिटिक्स, एंड आई डिडंट टेक हिम सीरियसली। 8 साल बाद जब ये राइडिंग मिसिसागा एरन मिल्स की खुली, he said again, he said, Iqra, I still think you should go into politics, and this time I listened to him. अच्छा, सही। तो क्या आप अगर फर्स्ट के लिए हम इसे कहते हैं कि किसने आपको हेल्प किया, किसने मेंटर किया, किसने मोटिवेट किया, तो कि कौन लोग हैं? 2-4 लोग आप मेंशन करना चाहेंगे जिन्होंने आपके लिए? My family is number one paramount. My mom, जितना वो हार्ड वर्क करती हैं, I think उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, and my dad is a visionary. And then there's, you know, professors, friends throughout my whole life that have had a very positive impact. My very close friends as well. So I'm very very happy with just the support system. I think politics में support system की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कितनी बदलती है ज़िंदगी पॉलिटिशियन बन के? पहले ज़िंदगी जो थी वो कैसी थी? ठीक है, जॉब भी थी, आपने लॉ के वाले से भी किया, सिटी में भी काम किया, कुछ वैसे भी प्राइवेट काम किया, उसके बाद आप पॉलिटिशियन बन गई, मेंबर पार्लियामेंट बन गई, तो कितना ज़िंदगी तब्दील हुई? कुछ अपनी जो ज़रूरी, मतलब अब लगता है कि जो आज़ादी थी वो ख़त्म हो गई? You know, पहले एक गुमनाम होने से, you know, you have your freedom. I think the biggest sacrifice as a politician that we make is our privacy. We become public figures and so have to live up to higher standards, which you know, is I think acceptable, especially jab young people look up to me. I want to make sure that I'm setting a good example to them. And the other thing is, I think being a member of parliament is not a job, it's more of a lifestyle. You know, कभी भी किसी भी वक्त कोई भी crisis हो सकता है, and you have to be on call at all times. सही। अच्छा, ये कितना है, इसको अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव देखें एज ए MP जो है, आसान है? मतलब ये ज़िंदगी आसान है? पॉजिटिव्स क्या रहे और नेगेटिव्स क्या हैं आपको जो लगते हैं? Positives यही हैं कि I get to make an impact in my community, in my country. I get to contribute back to this beautiful country that is Canada, and really speak out, right? जो issues मेरे constituents को बहुत अहम लगते हैं, that I am very passionate about, उन पे काम करने का मौका, I think it's a privilege, and having the trust of Mississauga Erin Mills for 2 terms is definitely a privilege. And then the negatives obviously is that lack of a personal life, because you're always working. सही।
اچھا آپ نے کیونکہ خود ہی اب آپ اپنے ٹرمز کے، میں تو بھی اور پرسنلی کچھ کرنا چاہ رہا تھا بات، لیکن چلیں اسی پہ آ جاتے ہیں. سیکنڈ ٹرم ہے آپ کی. کیا اگر لبرل کے ساتھ تعلق ہے، لبرل کی جنرلی میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا بتائیں کہ ان دو ٹرمز میں کیا اچیومنٹ رہی؟ ایک تو آپ اس کا بھی ذکر ضرور کیجیے گا، اسلاموفوبیا کے حوالے سے آپ کا بہت زبردست کام ہے، آپ نے جو ہے وہ موشن بھی لے کر آئیں. اس پہ کیا اچیومنٹ ایک عام اگر فرض کر لیجیے انڈیسائیڈڈ کوئی ہے ووٹر ہے یا اس کو نہیں پتا یا جو موٹیویٹیڈ ہی نہیں ہے ووٹنگ کے لیے، تو کیا اچیومنٹس ہیں لبرل کی؟ Well, I think achievements بہت زیادہ ہیں, لیکن I'll hit the top maybe 5. Okay. The first and foremost being 2015 میں the first order of business for our government, our liberal government, was to cut taxes for the middle class. Okay. So we reduced taxes for that middle class. We increased Canada Child Benefit and made it more accessible to those that need it, rather than to giving checks to millionaires, for example. Child care is a huge victory, I think, to make sure that half our population are able to go to work by building that national child care plan. Usme bahut zyada investments bhi hum already kar chuke hain and are now moving towards $10 a day child care. Inshallah, we'll be hoping to achieve that in the coming years. And then I think one of our biggest accomplishments has been our housing strategy. National housing strategy that we put into place in 2016, $72 billion commitment across the country on that housing. Uska fundamental principle ye hai ki everybody has the right to housing in Canada, to affordable, good quality housing. And usi plan ko ab hum through this platform are building on that plan to make housing more affordable, especially for our younger generation. And now hoping to, pichle 6 saalon mein, we've been able to create more and more jobs for everyone. Hamara unemployment rate has been the lowest in recent history of Canada. And now obviously with the pandemic having really injured our economy, hum koshish kar rahe hain ki hum ab economic recovery hum ab kaise karenge, and to create those million new jobs jo ki Canadians ko bahut zyada zarurat hai is waqt, to grow our industry, to grow our economy. یہی ہمارا ابھی فوکس. صحیح. اچھا ابھی اسلام فوبیا کے حوالے سے ہمیشہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ایگزسٹ کرتی ہے، ہمیشہ وہ بات بھی کرتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کمیونٹی میں، یا پھر اور چیلنجز ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں اسلام فوبیا کے حوالے سے؟ We banned and declared terrorist groups of right-wing organizations like the Proud Boys. We increased security infrastructure funding, جیسے کہ ہماری riding میں Muslim Neighbor Nexus was able to take advantage of. And we created an anti-racism secretariat, an anti-racism strategy, and then the London attack happened. And based on those attacks, we brought together the Muslim community from across the country. Kuch 900 logon ne participate kiya is Islamophobia Summit mein, to put forward strong recommendations ke ab hum next steps hamare kya hain. The reality is, Arshad bhai, is that there's no light switch that we can turn on or off with racism and discrimination. It has to be federal government, provincial governments across the country, municipal governments, civil society, grassroots organizations, and most importantly, I think individual Canadians that have to come together and have to continue to build those bridges between communities. हमने बहुत ज़्यादा काम किया है और हमें बहुत ज़्यादा काम अभी करना भी है. And I think it's very important for us to have the support of even opposition parties, for example. جب M103 اور اسلاموفوبیا کا ڈبیٹ چل رہا تھا پورے ملک میں, تب conservative candidates, including the current leader of the Conservatives, were fundraising off of the backs of Muslim communities. They were spreading those misinformation and scaring Canadians about the Muslim community, for example. And now, after London attacks, I think to see other political party leaders use the term Islamophobia, jab 2017 mein wo itna khilaf the is term se, I think ke progress definitely ho raha hai, lekin hame zyada se zyada leadership chahiye is issue ke liye. کنزرویٹو کا بھی یہ کہنا ہے کہ ظاہر ہے ہم نے پچھلی اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے کہ ہم اب جو ہے وہ تھوڑا چینج جو ہے وہ اس حوالے سے ہو رہے ہیں. اچھا اب اگر ہم پولس کے حوالے سے دیکھیں، ایک تو آپ بلیو کرتے ہیں پولس پہ روز چینج ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. دوسرا کیا ایک نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ ساؤتھ ایشین پاکستانی جو ہیں مور ٹورڈز لبرل،
مطلب یہ فار گرانٹیڈ جو ہے وہ لے لیتے ہیں کہ بھی لبرل کو ہی سپورٹ کرنا ہے. جنرلی میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ. تو یہ ایک عام شخص ہے وہ کیوں لبرل کو ووٹ دے؟ ایک تو ہے نا کہ ایفیلیشنز ہیں کہ جی ٹھیک ہے لبرل ہے, سب لوگ کہتے ہیں ساؤتھ ایشین یا پاکستانی لبرل کو ووٹ دیتے ہیں, لیکن جنرلی اگر آپ کیسے کسی کو کہیں کہ بھی لبرل کو ووٹ دیں, کیوں ووٹ دیں آپ کو؟ Well, firstly, آپ کے پہلے سوال کا میں کہوں گی کہ the only polls that matter are the polls on election day. That's What comes very right, out of the yes. ballot box. ٹھیک. And with respect to South Asians predominantly supporting the Liberal Party, یہ اس لیے ہے کیونکہ Liberal Party کی جو policies ہیں they are inclusive, right? I mean اگر آپ ہمارے conservative benches کو دیکھ لیں, it's not very diverse. There seems to be no room for other communities within that caucus, for example. اگر آپ ہمارے liberal benches دیکھیں, you'll see that every community, most communities are represented within our team. And I think that makes a big difference. ہماری inclusive policies just on combating racism ابھی ہم بات کر رہے تھے. Our track record is really great on this. جو multiculturalism policies ہیں ہماری کینیڈا کی was brought in by Pierre Trudeau. جو ہماری economic inclusion کی policies ہیں, again, جیسے کہ women entrepreneurship program, the black entrepreneurship program, supporting the challenges of immigrants, newcomer settlements, increasing immigration, understanding کہ جو ہماری labor market کی growth ہوتی ہے is based on immigration, and then building on those policies. I think these are the reasons why people support the Liberal Party. And the last thing I'll say is our Charter of Rights and Freedoms was brought in by a Liberal government. And that charter ensures کہ بھلے ہم جتنے مختلف ہوں, however diverse we are, کہ everybody deserves respect, and our charter ensures that. اچھا, ہماری جو مطلب ہم پاکستانی اوریجن کی بات کریں تو ان کی نمائندگی بالکل کنزرویٹو میں بہت کم ہے, لیکن ہمارے دوسرے ساؤتھ ایشین ان کی کم از کم کچھ نہ کچھ حد تک ہمیں ضرور نظر آتی. اچھا, اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں آپ کی رائڈنگ کے حوالے سے. اب ظاہر ہے سیکنڈ ٹرم آپ کر رہے ہیں, جب آپ آئی تھیں تو کیا مسائل تھے رائڈنگ کے, اور کیا 6 سال میں کچھ حل ہوئے ہیں, کوئی دیکھی کوئی چیزیں آپ نے کی ہیں اس میں؟ جی بالکل, ہماری جب ہم آئے تھے in 2015 تو we were facing a huge economic slump from the previous government. And jobs was a big priority. Support for young people was a big priority. Maybe riding Mississauga Erin Mills, about 53% of that riding is first generation immigrant. And the riding's average age is 37 years old. So a lot of young families settle here. They take advantage of the great schools in our riding. And 75% of them, of the people that live in Mississauga Erin Mills, have at least a post-secondary education. So we're very, like middle class, very educated and young riding. And पिछले 6 सालों में, myself locally, either whether through the Canada summer jobs, whether through community infrastructure funding, whether it's through creating national programs that benefit our riding, we've been able to create thousands of jobs, support small businesses, and also support not-for-profit organizations, charitable organizations, جو کہ جیسے کہ newcomer settlement کو support کرتے ہیں, that support students that are settling in our country, young families جو کہ ہماری riding میں جو settle ہیں and are trying to make ends meet. I think there's been a lot of work that has been done with that respect. I'll give you a couple of examples. Sure. Muslim Neighbor Nexus is a Muslim community organization that operates in our riding. And over the past number of years, not only have we been able to support them with funding for security infrastructure, lekin also for building seniors programming. Just this year, we were able to get them $25,000 to run a seniors program out of their facility. Ivan Franco Homes is a seniors facility jo hamari riding mein hai. It's a Ukrainian community, so unke liye bhi we've been able to provide support. Chinese organizations, and so many more to create jobs for young people and to support businesses and for not-for-profits. I think overall the economic picture, the cohesion of different communities in our riding has improved over these past 6 years. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی جو پاکستانی کینیڈین, ظاہر ڈائریکٹ ہم سب کینیڈینس ہیں لیکن ظاہر ہے اوریجن ہمارا پاکستان,
تو ان کی توقعات کیسی, آپ جو لوگ آپ کو اپروچ کرتے رہے ان کی توقعات کیا تھیں؟ کوئی ایسا لگا کہ بعض اوقات ایڈوانٹیج, ظاہر ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری ممبر پارلیمنٹ ہے, لیکن آپ تو پوری تمام کمیونٹیز کی ممبر پارلیمنٹ ہے, تو یہ ایک ڈائلاگ سا رہتا ہے ان کے ساتھ پورے اس عرصے میں؟ ویل آئی تھنک میں خود پاکستان میں پیدا ہوئی تھی, تو وہ جو حصہ ہے ہماری ہیریٹیج کا وہ ہمیشہ ہمارے دل میں قائم رہے گا, دیٹ لو, رائٹ. سو ون تھنگ دیٹ دا پاکستانی کینیڈین کمیونٹی جو کہ میرے سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں اینڈ دیٹ آئی ایبسلیوٹلی انڈرسٹینڈ اینڈ آئی ورک آن very regularly is building that relationship between Canada and Pakistan. So there have been a number of things that I've been able to do along with my friend and colleague MP Salma Zahid and our Canada-Pakistan friendship group, really promoting economic trade. Pakistan se delegations aayi hain Canada mein and met with our ministers here. Canada se delegations gayi hain Pakistan mein, and we continue to build that people-to-people relationship. Pakistan was included in the student direct stream to make sure that more international students coming from Pakistan. اچھا, میں اسی پہ بات کر رہا تھا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے ڈائریکٹ اسٹریم جب شروع ہوئی تھی آپ کے آفس میں ہی منسٹر آئے تھے, امیگریشن منسٹر آئے تھے. یہ ایک بہت مسئلہ ہے اور ابھی تک لوگ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان سے اسٹوڈنٹس کم آتے ہیں, اور پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو پروسیسنگ ہے وہ پاکستان میں نہیں ہو رہی ہے. وہ تو یہ ایک مسئلہ, اس کے اوپر اس عرصے میں آپ نے کچھ کام کیا؟ کیونکہ لوگ یقیناً آپ سے روز جو ہے یہ بات کرتے ہوں گے, تو یہ کیوں نہیں پاکستان میں جو ہے اس کی پروسیسنگ ہوتی؟ پلس کیا ڈائریکٹ اسٹریم کے بعد پاکستانی اسٹوڈنٹس کے نمبرز بڑھے ہیں آنے میں؟ ویل جب 2019 میں ہم نے یہ اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم شروع کی پاکستان کے لیے, 6 to 8 months I think later COVID happened. So there were no students coming and going between the countries. جو files مجھے personally I've had my attention brought to them, ہمارے constituents for example, ان کے family members جو یہاں پر international students کی طور پہ آنا چاہے ہیں, we've been able to provide support for them to make sure کہ ان کے visas are approved. But with COVID and no visas being issued, اس طرح سے نہیں پتہ چلتا. Exactly. اچھا, ابھی جو لوگوں کا زیادہ مسئلہ جو ہے امیگریشن کے حوالے سے ہوتا ہے, زیادہ تر اسٹوڈنٹ وزٹ ویزا اس قسم کے معاملات پر ہوتے ہیں, تو جو آپ تک اپلیکیشن آتی ہیں آپ کی رائڈنگ کے حوالے سے, تو اس کا کیا فالو اپ آپ ان کو دیتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ اس حوالے سے بات کرتے ہیں, تو اگر آپ ظاہر ہے کنسرن منسٹری کو بھجواتے ہوں گے یا کچھ کرتے ہوں گے, تو آپ کا آفس ان سے لائزن کرتا ہے, ان کو فیڈ بیک دیتا ہے, فالو اپ کرتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی. آئی مین ہمارا جو کنسٹیچوئنسی آفس ہے, پچھلے 6 سالوں میں ہم نے کچھ 9,000 فیملیز کی سپورٹ کی ہے, ویدر اٹس فار امیگریشن اور ٹیکسز اور پینشنز اور اسٹوڈنٹ لونز اور اینی ادر فیڈرل ایشوز. So that support is always there. And I always say to constituents کہ اگر آپ مجھے بتائیں گے نہیں کہ آپ کی یہ ایشو چل رہی ہے, then I can't work on it, I can't help you through that process. So I always encourage constituents, کوئی بھی ایشو ہے, any ideas that you have, any specific challenges you have, to reach out to my office. We're very accessible in that regard. تو کیا مطلب زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کام ہو گیا, بات ہوئی, یا ناراض ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی رسپانس نہیں آ رہا, جواب نہیں آ رہا؟ ظاہر آپ تک کی بات تو آتی ہے. Well, we do our best, to make sure کہ ہمارے 129,000 جو constituents ہیں ان سب کو effective support and resources ملے. So obviously there's always room for improvement, and inshallah I will continue to work on it. اچھا, آپ یوتھ کونسلز میں دیکھتا ہوں آپ جنرلی بہت زیادہ اس حوالے سے کرتے ہیں, آپ کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں, بعض اوقات خواتین کی الگ سے آپ نے بنائی ہوئی. آپ کی ظاہر ہے جو یوتھ کو انسپریشن ایز این آپ ینگ ممبر پارلیمنٹ ہیں, تو انسپریشن آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری کمیونٹی انوالو ہو رہی ہے پالیٹکس میں؟ کیونکہ جنرلی پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ والنٹیئر کرنے میں, پالیٹکس میں خاص طور پہ اس طرح سے انڈلج نہیں ہو رہی تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ لوگوں کی وجہ سے یا باقی جو ماحول بنا ہے, ہماری کمیونٹی بھی اس میں زیادہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہے؟ ارشد بھائی, میں آپ کو بتا نہیں سکتی کتنے مجھے فخر ہوتا ہے جب تھرو دس کیمپین پیرنٹس اپنے ینگ بچوں کو میرے حوالے کر کے جاتے ہیں, ایز دے والنٹیئر ٹو سے کہ they need confidence, can you please help them grow their confidence, can you please help them find their career path, or یہ آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں گے تو ان کو بھی احساس ہوگا کہ پالیٹکس کیوں امپورٹنٹ ہے. اینڈ we have over 100 young volunteers through this campaign, and ان سب کی lived experiences, ان سب کے dreams, ان کی خواہشات کا جاننا, and to support them and give them advice, I think it's inspiring for me.
and I hope that they take those lessons. And I know that these 100 some young volunteers through their involvement मेरी campaign में will always make sure that they vote at the very least. And I think ये जो volunteerism है, it is so important political engagement के लिए. सही. अच्छा, अब ये भी बड़ा डिबेट रही है कि क्या ये सही वक्त था इलेक्शन को अनाउंस करने का या नहीं. ज़ाहिर है आपको भी इस हवाले से फीडबैक मिलती होगी. कुछ लोगों को कहना होगा कि नहीं जी ऐसे ही कर दिया, अब सही नहीं, देखें नंबर्स कम आ रहे हैं. तो ये डिबेट है, लोग करते हैं सवाल इस हवाले से. बिल्कुल, एंड सवाल बिल्कुल वैलिड है. लेकिन अरशद भाई, जब 2019 में हम दोबारा इलेक्ट हुए थे, यस एज अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट, हमने एक मैंडेट पे हमने रन किया था, एक प्लेटफॉर्म पे रन किया था कि हम ये हमारी कैनेडियन कम्युनिटीज़ के लिए करेंगे. लेकिन फिर कोविड आ गया एंड वी स्पेंट 18 महीने making sure that every Canadian is vaccinated. Right now, about 80% of our population is vaccinated. We made sure that nobody, jobs जा रहे थे हर जगह. We made sure that nobody went hungry, nobody went homeless. The businesses survived through this pandemic. And now, at the tail end of COVID, अब हमें Canadians से दोबारा mandate चाहिए. We need Canadians to tell us कि हमारी economic जो recovery अब हम करने जा रहे हैं, कि उसका plan कैसे होना चाहिए. And जब तक ये confidence Canadians की in their government नहीं होगी, then we can't move forward effectively. सही. अच्छा, अब एक और चैलेंज है इलेक्शन के हवाले से जो न्यूज़ आ रही हैं कि स्कूल्स जो हैं वो पील डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या बाकी, अगर आपकी हम मिसागा की बात करें तो पील स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आता है, बाकी टोरंटो स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, वो हेजिटेंट हैं, वो स्कूल्स शायद नहीं दे रहे हैं फॉर द पोलिंग्स. तो ये एक मामला भी आ रहा है. इसको हल करने के लिए कुछ कोशिश हो रही है? क्या सूरत हाल बनी, क्योंकि एडवांस पोलिंग भी आने वाली है 10th को. जी बिल्कुल, आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज यही है, लेकिन देयर आर अदर ऑप्शंस. फॉर एग्जांपल मेल इन बैलेट रिक्वेस्ट्स हम कर सकते हैं. सो elections.ca पर जाके, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पोलिंग लोकेशंस, यू कैन ऑर्डर इन योर बैलेट एट होम. It takes 3 business days to get your ballot. Every person can do it who is of voting age. And all you need to do is fill out the online form, send them a copy of your driver's license or any other photo ID, and they will mail your ballot in to your mailbox. आप उसको fill करके, you have to send it back before September or by September 20th, which is election day. लेकिन the deadline for ordering your mail-in ballot is September 14. लेकिन इसके अलावा I would still say कि yes, हमारे challenges हैं with fewer polling locations, but we have to make sure that everybody gets out to vote. आपका vote बहुत बहुत ज़्यादा अहम है. It is your voice, and people must go out and vote this time. सही. अच्छा, 14 तक तो वो कर सकते हैं, उसके बाद 3 दिन में आएगा 17, वापस वो काउंट हो जाएगा 20th से पहले, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड. मतलब सारी चीज़ें, क्योंकि रात को 9-10 बजे तो फिर अनाउंस हो जाता है 10 बजे तो. Well, that's the thing. इस साल शायद इलेक्शन के results, depending on how many people vote by mail-in ballot, they may not be announced on election night, but the returning officers will be announcing. मतलब मे भी है, हो सकता है हो भी जाएं, हो सकता है कहीं ना. अच्छा, एडवांस पोलिंग में आप क्या लोगों कहेंगे, क्योंकि एडवांस पोलिंग अब 10, 11, 12 और 13 को होने जा रही है, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं? क्योंकि अगर अब स्कूल्स नहीं है तो मेरे ख्याल में पोलिंग स्टेशंस कम हो जाएंगे, जहाँ रश ज़्यादा हो जाएगा, तो बेहतर नहीं लोग एडवांस पोल में पोल डाल दें? Exactly, right? I mean, 4 दिन है, हम अपना स्केड्यूल उसी हिसाब से बना के we just go and we vote in those polling locations. हमारी राइडिंग में 4 लोकेशंस हैं. You know, the ICCO, the Muslim Association of Canada on Dunwin is one. The Erin Mills Twin Arena is another one. South Common Community Center is another one. Churchill Meadows Library is another one. So जितना लोग you know, over these 4 days time निकाल के चले जाएं, the better it is for them, उनके schedule के हिसाब से. सही. अच्छा, आप 6 साल में जितना आपने काम किया, आप मुतमईन हैं कि आप जो कर सकते थे आपने कर लिया, और अभी क्या लगता है आपकी राइडिंग में क्या कुछ होने वाला है और आगे आने वाले में, अगर इंशाल्लाह आप नेक्स्ट मेंबर पार्लियामेंट बनती हैं, तो क्या चीज़ वहाँ की इस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? That's a very good question, Arshad bhai. I just my own personal characteristic is मैं आप किसी और के साथ competition नहीं करती, मैं अपने आप के साथ competition करती हूँ. And I think better is always possible, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं. पिछले 6 सालों में मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए अनथक होकर काम किया है, and I'm hoping to do more. There's a number of different issues जो कि मैं बहुत ज़्यादा address करना चाहती हूँ.
in the coming years, hopefully. One is on human trafficking. Okay. Peel region is one of the biggest hubs of human trafficking in our country, and we really need to provide that support to our local police, to women's organizations, to prevent human trafficking of our young girls in our community. The other is really economic development of young people in Mississauga, Erin mills. And then the last is making sure that jo hamare seniors hain, they have the support and the dignity and the respect to live peacefully in after a whole lifetime of hard work. صحیح. اچھا, اب اس میں بڑا بعض اوقات ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں جب مختلف جگہوں پہ بیٹھتے ہیں. ایک تو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ہماری ایک ایسی کونسل ہونی چاہیے کینیڈین آف پاکستانی اوریجن کی جو مشورہ کم از کم دے سکے, چاہے ایلڈرلی کونسل ہو یا کوئی بھی کونسل ہو, کیونکہ بعض اوقات آپ کو نئے لوگ نہیں مل رہے ہوتے فار جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کوالیفائڈ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ نہیں مل رہے ہوتے. تو آپ کو لگتا ہے کچھ لوگ ایسے ابھی آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جو پوٹینشلی کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں, پروونشل ہوں یا کہیں ہوں؟ ظاہر آپ کی سب سے ملاقات رہتی ہے, نوجوان آپ کے ماشاءاللہ کاؤنسلز میں بھی آ رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں ہماری کمیونٹی میں, آ رہے ہیں آگے؟ Absolutely. I mean, آپ میری یوتھ کاؤنسل کو دیکھیں, so many engaged young people, بھلے وہ پاکستانی اوریجن ہے یا کوئی اور نیشن سے اوریجن رکھتے ہیں. And also for my women council, so many bright women that are leaders of their own right in our community. I think nurturing and really getting into that political process, into the political system is very important. And I think people like myself and other members of parliament and other candidates, unke upar ek obligation hai to lift up those that are aspiring to be, those that are jo qualities wo show karte hain, jaise ke my dad lifted me up. I hope that I'm quite driven to lift up other people to participate and to become leaders in our community. صحیح. اچھا, ابھی ہمارے 3 ممبران, ٹیکنیکلی 2 ممبران پارلیمنٹ آپ ہیں, سلمہ صاحبہ ہیں, اور سمیر زبیری مونٹریل سے ہیں, لیکن ابھی لگ رہا ہے, ہمیں بہت امید ہے, برمپٹن سے شفقت علی صاحب ہیں, اوٹوا سے یاسر نقوی صاحب ہیں, اور کنزرویٹو سے بھی کچھ مضبوط امیدوار جو ہیں ندیم صاحب ہیں یا ملئیے یا باقی. تو یہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے کہ مطلب آپ, ہم گروپ کی بات تو ظاہر ہے یہ سارے تو کینیڈینز ہی ہیں, لیکن ایک خاص اوریجن کے ہیں, ایک خاص کمیونٹی کے ہیں, تو یہ امپیکٹ اگر جتنے زیادہ لوگ ہوں گے امپیکٹ اچھا ہوگا فار دی کمیونٹی آلسو اور اوور آل سچویشن کے لیے؟ Well, I think so. I mean, جب ہم organize کر پاتے ہیں as members of parliament, بھلے آپ کی heritage جو بھی ہو, to organize on certain issues and to advocate for certain issues, جتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اتنی زیادہ loud voice ہوتی ہے. So I'm hopeful and I'm really excited to work with Shafqat Ali and Yasir Naqvi, and obviously continue working with Salma Zahid to make sure that the Pakistani Canadian community is well represented in Ottawa. All right. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کوشش کی میں نے, کچھ اس وقت میں آپ بزی ظاہر ہے ڈور ناکنگ سے درمیان سے آپ جو ہیں وہ آئی ہیں, تو کیا میسج ووٹرز کو ہم چاہیں گے کہ آپ ان کو میسج دیجئے ووٹنگ کے حوالے سے, آپ کی رائڈنگ کے حوالے سے؟ میں چاہوں گا میسج. Thank you so much first and foremost, Arshad Bhatti Saab, for always being such a strong leader and advocate in our community. جو issues آپ raise کرتے ہیں, کرتے رہتے ہیں, they are strong issues, they are true issues, and you always hold people like me to account to make sure کہ ہم ان issues پر کام بھی کر رہے ہیں. And to our voters of Mississauga, Erin mills, and across the GTA and Canada, I really strongly encourage you to vote. آپ اپنا ووٹ ضرور ڈالیے, جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ اپنا ووٹ ڈالیے, یا تو آپ اپنے بیلٹس میل ان کروائیں یا آپ ایڈوانس پولنگ میں آپ حصہ لیں September 10, 11, 12, 13, or you can go to the returning office at any time to vote by special ballot. And then obviously on election day, please make sure you vote. آپ کا ووٹ آپ کی آواز ہے. And if you would like to support my campaign, I would love to have you and your family as volunteers for the Iqra Khalid campaign in Mississauga, Erin mills. There are 3 ways to support any candidate. That is to vote, to volunteer, and to donate. And I really encourage you to be part of the political process. Canada ہمارا ملک ہے, ہمارا home ہے, and we have to take ownership and to give back to this beautiful country as well.
I thank you again for your support, and inshallah look forward to continuing to represent you in our riding of Mississauga Erin Mills. थैंक यू वेरी मच इकरा खालिद साहब, बहुत शुक्रिया एंड विश यू वेरी गुड लक इलेक्शन के लिए। Thank you very much, Arshad bhai. नाज़रीन किराम, बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की है, जो 3 काम जो हैं आप वोट लाजमी कीजिएगा। एडवांस पोलिंग 10th, 11th, 12th एंड 13th को है, आपको जो है पता चल जाएगा। आजकल हर चीज़ वेब पे मौजूद है कि कहाँ पे आपको जाके वोट डालना है, किस राइडिंग में कहाँ पे जो है, और अपने टाइम के मुताबिक 4 दिन है, जब भी आपको वक्त मिले आप वोट ज़रूर डालें। वॉलंटियर करें, क्योंकि आजकल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये अपने बच्चों को खासतौर पर पेरेंट्स को मैं कहूँगा कि वो अगर आप इनकी राइडिंग में या किसी भी राइडिंग में जाएं, कैसे डोर नॉकिंग की जाती है, लॉन साइन कैसे लगाए जाते हैं, उनको पता चलता है, वो सिस्टम में आते हैं, उनको अच्छा लगता है कि वो हिस्सा बन जाते हैं, तो उनको खुशी होती है। और थर्ड वन जो है, एक ख़ास जो राइडिंग होती है उसकी कैपेसिटी होती है जो फंडिंग के हवाले से होती है, उसके अलावा जो फंडिंग है वो डोनेशन से आती है। तो ये भी आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट है कि अगर आप समझते हैं और मुमकिन है आपके लिए, तो ज़रूर अपने जहाँ जहाँ राइडिंग में जिन उम्मीदवारों को आप पसंद करते हैं और चाहते हैं आएँ, तो डोनेशन ज़रूर दीजिए। मुख्तलिफ जो है फंड रेजिंग होती है, बाज़ू का डिनर्स होते हैं, या वैसे भी डोनेशन हो। डोनेशन देने के बाद आपको पता है कि आपको टैक्स रिसीप्ट मिलती है, उसमें कुछ हिस्सा जो है आपको वापस आ जाता है, लेकिन वो गिव बैक आप कम्युनिटी के लिए, अपने उम्मीदवार के लिए करते हैं, और गवर्नमेंट आपको जो है वो गिव बैक करती है। तो ये ज़रूर तीनों चीज़ें हैं, वोट, वॉलंटियर एंड डोनेशन, और अपनी ज़िंदगी का ये मोटो बना लें। डोनेशन, अभी तो इलेक्शन की बात हो रही, वैसे भी जो भी कहीं कोई ज़रूरतमंद है तो उसको डोनेट जो है आप ज़रूर करें। हमारे मज़हब में तो इस हवाले से कहा जाता है कि जितना ज़्यादा आप डोनेट करेंगे, जितना आप सदका खैरात करेंगे, उतना अल्लाह रब्बुल करीम आपको और ज़्यादा जो देते हैं। और सेकेंडली, एज ए मीडिया, यकीनन हम जो हैं वो तमाम लोगों के लिए हमारे दरवाजे खुले रहते हैं, हम किसी एक को उस तरह से बात नहीं कर सकते, लेकिन इन पर्सनल कैपेसिटी मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग मिस्सागा एरन की राइडिंग में हैं, इकरा खालिद साहबा को वोट दीजिए। मेरी पर्सनल कैपेसिटी में मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि दोबारा मेंबर पार्लियामेंट बने और उसी तरह से कम्युनिटी की जो है वो खिदमत करें और कम्युनिटी को जोड़ के रखें। बहुत माशाल्लाह से इन्होंने 6 साल में काम किया, और इंशाल्लाह अगली टेन्योर में भी ये ज़रूर काम करेंगे। अपने लोग जितने भी ज़्यादा आते हैं वो यकीनन, हम कैनेडियन हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, लेकिन आपकी शनाख्त के साथ साथ आपके बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो यही आगे लेके जाते हैं। अगर आपकी कोई कहीं से ना हो तो आपके लिए बड़ा मुश्किल काम है। आप ईमेल्स करेंगे, आप उसके बाद ख़त लिखेंगे, अपने मेंबर पार्लियामेंट के पास जाएंगे, लेकिन अगर आपके अपने मेंबर पार्लियामेंट होंगे तो आपके लिए कोई ना कोई कनेक्शन किसी न किसी हवाले से होता है। तो ज़रूर जो है मैं चाहूँगा आप इनको सपोर्ट कीजिए, और हाँ, वोट आपने ज़रूर देना है। जो आपको अच्छा लगता है, ज़रूर इनके लिए हम ज़रूर कहेंगे इनको वोट दें। जो उम्मीदवार आपको अच्छा लगता है उसको वोट दें, एडवांस पोलिंग में वोट दें या वोटिंग के दिन वोट दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंज जो है वो ला सकता है। तो चलिए जनाब, यही करेंगे प्रोग्राम के इख्तिताम। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी कुहाड़ने की चीज़ है। एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। स्टूडियो इंजीनियर तरह भट्टी अपने मेज़बान अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और सपोर्ट देना। अपने प्यारों को बुलाइए, कनाडा में बसाइए। ICC इमिग्रेशन मुस्तकबिल संवारे आसानी के साथ, ICC के साथ। ICC इमिग्रेशन के RD, MD और उनकी प्रोफेशनल टीम हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। इट्स 905-461-2424। ICC इमिग्रेशन। Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction?
Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. बैंक ऑफ पंजाब लाया पाकिस्तान का पहला मुकम्मल फ्री रोशन डिजिटल अकाउंट, जिससे आपको मिले मोबाइल ऐप, दुनिया भर में डेबिट कार्ड की फ्री डिलीवरी और बिना चार्जेस के इस्तेमाल की सहूलत, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का मौका, ऑटो लोन और ऑनलाइन यूटिलिटी बिल्स जैसी बेशुमार सहूलियात। अभी www.bop.com.pk पर ऑनलाइन रोशन डिजिटल अकाउंट फॉर्म फिल कीजिए और पाइए एक्सीलेंस यूनिट के जरिए 24 घंटे डेडिकेटेड सर्विसेज। बैंक ऑफ पंजाब, रखे हर फर्द का ख्याल। The service I have received has been prompt, efficient and courteous at all times. I would highly recommend him over anyone. They have excellent strategies to minimize the tax impact on investment properties. Their knowledge is second to none. Having a very good accountant was very important to us, which is why we chose Dean & Associates. We feel very well taken care of, and it's been the best business decision we've ever made. Making money feels good, but keeping it is the key to your success. Call Dean & Associates Accounting today at 647-273-3094 or visit deanassociates.ca. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. Hi, I'm Salma Zahid and I'm running for re-election as the Liberal Party of Canada candidate in Scarborough Centre. Only the Liberals have a plan for $10 per day childcare, national standards to protect our seniors in long-term care, and to make it cheaper to buy a home. We will create a new visa so families awaiting spousal sponsorships can be together sooner. And we will fight online hate. On September 20th, vote Liberal so we can move our community forward for everyone. Canada's Conservatives will secure the future for Milton. From Milton's small business and entrepreneurial sector to manufacturing, our plan will get Milton's economy back on track. We will restore accountability and trust in government, address the mental health epidemic, ensure we're ready for the next health crisis, and get Canada's fiscal house in order. I'm thrilled to work with your Conservative candidate, Nadeem Akbar. Nadeem has 17 years of experience as an IT professional. He's passionate about giving back to the community. Now he's ready to be your next Member of Parliament. Nadeem is ready to serve the people of Milton. Hello Milton, my name is Nadeem Akbar. I'm your Conservative candidate. To connect with me, check out my website, nadeemakbar.ca. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. हैंड सैनिटाइजर का बाकायदा इस्तेमाल बहुत से मुल्क को वबाई अमराज से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर बाजार में दस्तयाब तमाम सैनिटाइजर्स के मुकाबले में कई अहम खसूसियात रखता है। हेल्थ कनाडा से मंजूर शुदा 75% फूड ग्रेड अल्कोहल से तैयार करता pH बैलेंस्ड फार्मूला न सिर्फ आपको जर्म से बचाता है बल्कि आपकी जिल्द की हिफाजत भी करता है। 99.9% जर्म्स का फौरी और यकीनी खात्मा। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com. Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Kara, your proud Liberal Member of Parliament from Brampton West and your Liberal candidate for Brampton West. For the last 6 years, serving as your Member of Parliament has been the greatest honor of my life. Together, we've been able to accomplish so many things for our community. And I know the last 17 months have been extremely difficult with the global COVID-19 pandemic, but our government has had your back every single step of the way, and now it's your chance to have ours.
Thank you, and I hope I can count on your support on September 20th, once again as your Member of Parliament for Brampton West. अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की ज़रूरत होती है और हमारे साथ मौजूद हैं चैंपियन डेविड हिमोफार्ब. Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157. I'm Rob Oliphant, Member of Parliament and Liberal candidate for Don Valley West. Canadians have been resilient in the face of COVID-19, and they deserve a plan that will create jobs, improve our healthcare system, and build a better path forward. On September 20th, I'm asking for your support so we can finish the fight against COVID-19 and build back a better Canada that leaves no one behind. Let's keep moving Don Valley West and Canada forward for everyone. Vote for Rob Oliphant on September 20th. Hi, I'm Mr. Maladina from Home Life Driven Reality, where our vision is your growth. Are you looking to buy, sell, invest in real estate and confused where to start from? Don't be afraid. You will be moving in right directions with us. We deal in residential, commercial, pre-construction and investment properties. Take advantage of my 20 years experience in real estate. For one-on-one consultation, you can always call me at 416-434-3102. Since 1993, MWC food banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. We have a special focus on the needs of our children. Over 10,000 families across Canada rely on MWC food banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities in Ontario, Northwest Territories, and Nunavut. Your generosity can literally change lives. It's time now, more than ever, to look after your neighbor. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada Emergency COVID-19 Food Fund. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. Hi, I am Raja Rizwan Mahmood. I am a licensed mortgage professional. I specialize in a first mortgage, private mortgage, and refinancing. Whether you're a first-time home buyer, self-employed, or new to Canada, I will work with you to ensure you get the best mortgage for your unique needs. So call me now and let's get started on your dream home. रोशन मुस्तकबिल,
और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स and family sponsorships. So call now at 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Mortgage solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. Team Farhan को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294 or log on to www.teamfarhan.com. पूरे ऑन्टेरियो में लाखों लोग अपनी कोविड-19 की वैक्सीन हासिल कर चुके हैं। हेल्थ कनाडा की मंजूरशुदा तमाम वैक्सीन्स महफूज और अस्पतालों, डॉक्टर्स के दफातर, फार्मेसीज और अवामी वैक्सीनेशन के मुकामात पर हासिल हैं। अपना किरदार अदा करें, अपनी वैक्सीन हासिल करें। 300 जुबानों में मदद के लिए ontario.ca/book vaccine पर जाएं या 1-888-999-6488 पर कॉल करें। मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप यूट्यूब पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशंस के लिए कॉल करें 905-257-1342 या wimcanada.com पे लॉग इन हो। I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now. I can help. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Here at Z Auto Center, we pride ourselves in being professional, reliable, and affordable. Our certified technicians have years of experience working on all types of vehicles. Special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050 or visit zautocenter.com. Hi, I'm Mr. Maladina from Home Life Even Reality, where our vision is your growth. Are you looking to buy, sell,
invest in real estate and confused where to start from? Don't be afraid. You will be moving in right directions with us. We deal in residential, commercial, pre-construction, and investment properties. Take advantage of my 20 years experience in real estate. For one-on-one consultation, you can always call me at 416-434-3102. Since 1993, MWC food banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. We have a special focus on the needs of our children. Over 10,000 families across Canada rely on MWC food banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities in Ontario, Northwest Territories, and Nunavut. Your generosity can literally change lives. It's time now, more than ever, to look after your neighbor. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada Emergency COVID-19 Food Fund. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. Hi, I am Raja Rizwan Mahmood. I am a licensed mortgage professional. I specialize in a first mortgage, private mortgage, and refinancing. Whether you're a first-time home buyer, self-employed, or new to Canada, I will work with you to ensure you get the best mortgage for your unique needs. So call me now and let's get started on your dream home. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स and family sponsorships. So call now at 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams.